हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 5 सम ऑफ द अदर करेक्टर्स। ये MEG-7 है एंड ब्लॉक 3 है। सम ऑफ द करेक्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे आज। नाउ लेट अस स्टार्ट। अपार्ट फ्रॉम मूर्ति एंड द वुमेन करेक्टर्स, देयर आर अ फ्यू men who bear special mention from among the main figures of कांथापुरा। मीन्स कुछ और भी करेक्टर्स इसमें हैं। दे आर रंगे गौड़ा है, भट्टा है, बड़े खान है, पटेल रंगे गौड़ा है। अच्छा, अब हम पटेल रंगे गौड़ा की बात करेंगे। इसमें 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे रंगे गौड़ा, भट्टा एंड बड़े खान, 3 की बात हम करेंगे। रंगे गौड़ा जो है वो शूद्र है, हैज़ अ एंड ही हैज़ अ प्रोस्पेरस 9 बीम्ड हाउस। बीम्ड हाउस मतलब 9 पिलर का उसका घर है। इन अ शूद्र क्वार्टर ऑफ द विलेज ही इज़ अ बिग स्टडी मैन, अ वेरिटेबल टाइगर अमंग द विलेजर्स। With his tongue, his hand, and his brain, he has amassed solid gold in his coffers and solid gold on his arms. His 3 daughters live with him, and his sons-in-law work with him, though they own as much land as he does. मतलब उनकी भी अपनी वैसी इतनी ही प्रॉपर्टी है। His words are the law in the village. The villagers believe if the Patel says it, even a coconut leaf roof will become a gold roof. मतलब इतनी चलती है उसकी, इतना उसके बोलने का। अगर वो गोल्ड रूफ बोल देगा ना लीफ रूफ को, तो लोग उसको गोल्ड रूफ ही मानना शुरू कर देंगे। बोलते हैं दिन को कहो, रात तो रात कहेंगे, इस तरह से ही उसका था। रंगे गौड़ा इज एन ऑनेस्ट मैन एंड ही हेल्प्स पुअर peasants. The villagers respect him all the more since he is a terror to the authorities. It is not for nothing that he is known as a tiger. As the tiger. When Bade Khan, the policeman, comes to the village for the first time, he goes to Rangegoda to ask for accommodation to live in, but the Patel doesn't oblige him. पटेल उसको नहीं मानता है, मीन्स क्योंकि वो ऑफिसर होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऑन द अदर हैंड ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वॉल्टियर्स। ही मीन्स ये रंगेगौड़ा। रंगेगौड़ा is one of the first volunteers to join Murthy's struggle against the authorities. At the end of the novel, it is he who brings the final news of the transformation of Kanthapura. मतलब नॉवल के एंड में ये वही आदमी है जो कि वही जो है वो कांतापुरा जल गया या उस ये न्यूज़ वही लेकर आता है। ही टेल्स अ चक्का, वो चक्का को बोलता है, आई ड्रैंक 3 हैंडफुल्स ऑफ हिमावती वाटर एंड आई टर्नड अवे, बट टू टेल यू द ट्रुथ मदर, माई हर्ट इट बीट्स लाइक अ ड्रम। ओके, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया ना, आग लगी उस गांव में, इसलिए उसका दिल जो है बहुत परेशान हुआ। Now we are talking about Bhatta. Bhatta is a scholarly Brahmin, well versed in the religious lore of Hinduism. Hinduism की काफ़ी उसको जानकारी है। Wealthy and possessing vast lands, he doesn't know what it is to be kind and charitable towards others. इतना धन होने के बावजूद भी वो charitable नहीं है। He is a money lender, and when some poor fails to repay his debt, Bhatta quietly acquires his field to add to his own big estate. अपनी big estate में उसको उसकी प्रॉपर्टी को मिला लेता है जब कोई किसान अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता है। Blinded by orthodoxy and tradition, he doesn't see any good in the winds of change that come to Kanthapura with the Gandhian revolution started by Murthy. Bhatta conspires against Murthy and has him excommunicated from the Brahman community for his Parya leanings. तो वो मूर्ति को अपनी कास्ट से बाहर निकाल देता है, ब्राह्मण कम्युनिटी से बाहर निकाल देता है। The villagers fear him but do not respect him as they respect पटेल रंगे गौड़ा। वो पटेल रंगे गौड़ा को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। टूवर्ड्स द एंड भट्टा सेल्स हिज लैंड इन द विलेज एंड गोज टू लिव हिज लास्ट डेज एट काशी। वो अपनी ज़मीन बेच के काशी में रहना शुरू कर देता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बड़े खान। बड़े खान इज़ अ टिपिकल पुलिसमैन अंडर द ब्रिटिश रूल इन एविल इनकारनेशन, मतलब उसका बुरा रोल है उसमें।
अच्छा रोल नहीं है, करप्ट है, क्रूअल है, रूदलेस है. ही हैज़ नो ह्यूमन क्वालिटीज़. जय रामाचार इज़ नॉट अलाउड बाय द authorities to return to Kanthapura after he narrates the Harikatha about महात्मा गांधी. अब जय रामाचार को भी अलाउ नहीं किया जाता है कि वो वापस कांथापुरा आए, तो इसमें बड़े खान का हाथ होता है. 2 days later, बड़े खान comes to live in the village. When Rangegowda declines to provide a house for him, he swears to punish him and the other villagers. तो बड़े खान जो है ना, जब उसको जगह नहीं दी जाती तो वो बोलता है कि वो उनसे बदला लेगा. मीन्स बड़े खान बदला लेगा गांव वालों से. ही गोज़ ऑफ टू द स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट वेयर ही इज़ अलॉटेड अ हट टू लिव इन. From that day, he misses no opportunity to torment the villagers for rising to the call of Mahatma Gandhi. Bade Khan and his fellow policemen terrorize the people of Kanthapura and end up with destroying the village. But they are not able to suppress the patriotic spirit of the village, which remains burning in them wherever they go. Bade Khan is presented by Raja Rao as an example of how low a person in authority can fall. मतलब कितना आदमी गिर सकता है जब आदमी अथॉरिटी में, तो कितना गिर सकता है. वंस ही इज़ गिवन अनब्रिडल्ड पावर टू डील विद पीपल एज बैडली एज ही कैन. ही इज़ अ वर्चुअल राक्षस है वो ऑफ द ब्रिटिश, मतलब रावण राज का. एंड हैज़ नो राइवल टू द टाइटल ऑफ द चीफ विलन इन कांथापुरा. ओके, और उसका कोई भी दुश्मन नहीं है. has no rival to the title of the chief villain in कांथापुरा. मतलब वो चीफ विलन है उस कांथापुरा का. बड़े खान is a symbol of the British tyranny over the helpless masses of India. The British ये एक ब्रिटिश टायरनी का एक बहुत बड़ा सिंबल है. ब्रिटिश कॉलोनाइजर willingly made use of the services of native people like him to enslave the Indians. चलो, थैंक यू सो मच. ये तो हो गया, लेकिन इसमें लेट अस सम अप भी है. चलो इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं इसी में. द स्टोरी ऑफ कांथापुरा इज नरेटेड बाय अचक्का, अ ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज. ऑल द कैरेक्टर्स दैट फिगर इन द novel are projected from her point of view. She has her own special way of looking at men and women of the village, and if the author has any comments to make on individual characters, she puts them in Chakka's mouth. The figures in Kanthapura are mostly simple-minded and unsophisticated villagers who took at the new winds of change that come to the village with a sense of surprise and suspicion. Kanthapura is all about the life of a small village community. The leader of this community is Murthy, a shadow of Mahatma Gandhi, who inspires him to teach the villagers the path of satyagraha and non-violence. Murthy is a self-sacrificing young man with no personal ambition. Without any distinction of caste and class, he cares for all the villagers and tries to help them in whatever way he can. In spite of being a high caste Brahmin, he mingles with the untouchables and sympathizes with them in every way. Murthy is good, religious minded, noble, and the villagers regard him as their Mahatma. Women have now we are talking about the women. Women have an equal role to play in Kanthapura along with their male counterparts. In actual fact, they are more active in their social and political roles while looking after the children and the household. Apart from Achakka, 3 other women have some prominence over the others. They are Rangamma, Ratna, and Venkamma. Okay, the first 2 are good Gandhians. They organize the Sevika Sangh in the village. When Murthy and some of his associates are imprisoned, they also lead the women in protest marches. Venkamma has a vicious tongue, but she is not really bad at hurt. The 3 men of prominence after Murthy are Rangegowda, Bhatta, and Bade Khan. Rangegowda is a noble and well-to-do Shudra of the village who acts as the Patel for collecting the taxes. इसीलिए पटेल नाम दिया गया, पटेल लिखा गया है क्योंकि वो taxes को collect करता है. He doesn't think well of Bhatta and Bade Khan, who are
two of the bad characters in the novel. Bhatta is a learned Brahmin possessing vast land, and he lends money in order to grab the fields of poor and needy. He is opposed to the Gandhian revolution. Bade Khan is a ruthless policeman posted to the village to prevent the people from succeeding in their satyagraha. चलो, थैंक यू सो मच. यहाँ हमारा ये यूनिट आज फिनिश होता है. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.